In fields of laughter, innocence blooms. Childhood canvas painted with sweet perfumes. Carefree laughter, a melody untamed. No worries of life, hearts unclaimed. Imagination's flight, a boundless sky, where innocence and freedom gracefully lie. But with the glitz and glamour dome, does every child find an innocent home? At the end, is it worth the cost? Is it worth the cost? So I started when I was 6 years old. मेरी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई है कह सकते हैं 2010 के बाद से, बिकॉज उससे पहले मैं जिम्नास्टिक्स करता था. बेसिकली मैं नेशनल लेवल चैंपियन था. I'm a casting director, been in this industry for the last 30 years. So my dad's friend, he once called us and he said that there's a talk show happening. It's India's first child reality show and you should just go and give a shot because she's so talkative. And they're like, जो भी आता है करके बताओ. So I had a lot of things. I had no clue about this industry. I don't have any godfather. नाही म्हणजे मी रील्स करायची ना टिकटॉक. एका पॉइंट नंतर मग वी स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम आफ्टर 6 months. ते सगळं झाल्यानंतर मग इंस्टाग्रामवरती काही व्हिडिओज ते सुद्धा व्हायरल होत गेले आणि वन फाईन डे प्रोडक्शन हाऊसकडनं आम्हाला कॉल आला. म्हणजे मी फायनल झाली आणि मग मी थोडंसं हे होती की मला एवढा पण कॉन्फिडन्स नव्हता ना की मम्मा असायची आणि डॅडी असायचे. मम्मा शूट करायचे, डॅडी बाहेर बसायचे. तर मी अशी कन्फ्यूज होती की एवढ्या सगळ्या लोकांसमोर मी कशी करणार. तो बेसिकली एक कंपनी थी, क्यूरियस कंपनी. उन्होंने बहुत सारे मतलब 200 से 300 बच्चों का ऑडिशन लिया था उस वक्त, जिसमें मैं भी था. और उनको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मैंने ऑडिशन दिया तो और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया था. There is that demand of, like I said, working. And when you're working, you're not always enjoying yourself. अगर आप एक कार दे दो, खिलौना दे दो, तो बच्चे कार ही चलाते हैं सिर्फ, और इधर उधर ध्यान नहीं जाता है. तो हमारे साथ भी बचपन में ऐसे ही होता है. जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, हम एक बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने आप वहीं पे ही रहता है. फिर आप गेम खेलना है, बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो जो बचपन में करते हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें नहीं हो पाती. तो डेफिनेटली बचपना तो पूरा हमारी लाइफ से हटा के साइड में रख दिया जाता है. अपना मस्ती में करो, वो मिस हो जाता है. They're caught and taken by the media or with people around. कह सकते हैं कि वो जो पैम्परिंग होती है, जो एक बचपना लोग गुजारते हैं, तो वो बचपना मैंने नहीं गुजारा. I haven't seen any pampering in my childhood. And I have seen a lot of kids who have lost that innocence and that that playfulness. At the same time, I've seen kids who have become super intelligent, super smart. So it's how ultimately the parents train them. Is when you go to school, when you go to colleges, like how you meet, you make your best friends at that time. You connect, I mean, that's your life's best year. They are golden years. So you are missing out on those golden years. See, as a child actor, I think basic schooling is important, but you need to understand where your interest lies. So here the role is majorly played by the teachers. They have been guided that these are the children who will be little more absent during the year, not like a regular student. So please address whenever they are back, they should. And the parents are being guided to give your leave application, CC to the school principal, of course. But the teacher should be the first-hand information that they are not available because they are progressing with the curriculum. इस इंडस्ट्री में कैसा होता है कि आप जल्दी से लोग आपको स्टीरियोटाइप कर देते हैं. अगर आप बचपन से काम करते हुए आ रहे हो तो आपको चाइल्ड एक्टर में ही लोग देखते हैं. फिर उसके बाद वो ये नहीं देखते कि आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं. वो आपकी जर्नी को ना देख के आपको स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये चाइल्ड एक्टर ही है. त्यांना मी आणि श्वेता याबद्दल खूप स्ट्रिक्ट आहे. आम्ही जेव्हा पण कोणी सेटवरती जातो तेव्हा प्रोडक्शन हाऊस किंवा तिकडे त्यांना आमची बोलतो की सहसा अपशब्द नको वापरूया, जेणेकरून तिच्या कानावरती ते पडतील. मुलांचं कसं त्याने एक शब्द कॅच केला ना तो पटकन विसरत नाही. त्यामुळे आम्ही आधीच थोडंसं अलर्ट करतो की प्लीज सगळ्यांना सांगा की अशी काही शब्द वापरू नका. जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर्स में इतने सारे इमोशंस होते हैं. तो जब एक बच्चा बढ़ रहा होता है तो आई थिंक वो अपनी सराउंडिंग से ही सीखता है. राइट, अपने माँ बाप से सीखता है, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. और तो हम जब बच्चे होते हैं, हम जब हमारी सराउंडिंग कैसी होती है, एकदम रियल लाइफ में होती है. We try and sanitize the whole set before verbal sanitization before the child comes on set. Also,
make it comfortable for the child. When I used to do comedy circus, I was the only child actor on that set, and everybody was an adult, and they had some, double meaning jokes and something like that. मायराने जी पहिली सिरियल केली त्याच्यामध्ये मायरा दुपारी 2 ते 4 सेटवरती झोपायची. सो हे आम्ही ऑलरेडी कम्युनिकेट केलं होतं की लहान मुलगी आहे, थोडं तिच्या कलेने तुम्ही घ्या. सो ते प्रोडक्शन हाऊसला ऑलरेडी ही गोष्ट माहिती आहे. Yeah, so when I was doing Chote Miyan, the laws I think were followed very properly because we only used to shoot on Saturdays for 8 hours. So it's a must in television industry also. You have to consider the school hours and then you have to plan accordingly. Television has to abide by the rules of Sita. Literally, I'll tell you, मैंने 27 hours continuously shoot किया, no sleep. It's all documented only, but nobody follows them. Let me tell you very honestly. तो लिटरली हर 5-6 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था ग्लूकोज चढ़वाने के लिए, बिकॉज आई यूज टू शूट लाइक दैट. और अशोका इतना पावरफुल एग्रेसिव कैरेक्टर था, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत चोटें लगती हैं. मेरे पैर में चोट लगी थी, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, पट्टी बांध के मैं शूट कर रहा हूँ. पीपल हु आर लाइक पैसा तो मिल रहा है ना, कराओ भाई. Who cares? When I entered a comedy circus or shows like that, I started experiencing night shoots and like 16-hour shoots, 20-hour shoots, and that was the main reason I got out of this and took a break. पहिले 3 महिने आय वॉज देअर फॉर इट. म्हणजे आम्ही दोघं तिच्या पाठीशी गंभीरपणे होतो. आता ठीक आहे, आता इट इज आता तिलाही माहिती आहे, आम्हालाही माहिती आहे काय करायचं आणि काय नाही. One of the parent has to sacrifice their career for this. That's for sure. जब छोटी थी तो मैं बहुत इन्वॉल्व रहती थी क्योंकि पहले तो उसको स्क्रिप्ट रीड करने नहीं आते थे, उसको रीडिंग नहीं आती, तो उसको रीड करा के पूरा बाय हार्ट कराना पड़ता था, तो वो मेरा काम होता. But I've seen people who leave the children, young kids, on the set and come and go in the morning and pick them in the evening. Though there are a lot of people who take a lot of care of the kids, but end of the day, I personally don't like that. कुठलाही असा जो प्रोजेक्ट असेल तिला जोपर्यंत विचारत नाही तोपर्यंत आम्ही तो प्रोजेक्ट घेत नाही. सो तिचं से आहे. It's your perception what parents will put into a child's mind. If they see that they are going and acting, they are singing and they are enjoying it, probably that's a stress buster for them. अगर बच्चा पूरा टाइम इस इंडस्ट्री में है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चे पे होता है, ऐसे मुझे लगता है. I did a film called Thank You for Coming, and it was another topic of pleasures of women and self-love and everything. But then some relatives who are very conservative or who have not seen such cinema, I saw their attitude completely changing towards me, and some didn't even see the film, they didn't even congratulate me. So there are a lot of changes when you're in this industry. That can really take away self-esteem. क्योंकि अगर वो 12 घंटे किसी सीरियल में काम कर रहा है तो वो डेफिनेटली बड़ों के साथ ही रहेगा, बड़े कैसे बिहेव करते हैं वो देखेगा, उसका स्कूल मिस होगा. तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर रख रहे हैं. Child actor, I don't know whether I have a voice here. So one, we have to teach children how to be assertive, how to speak their mind but respectful. कधी कधी असं होतं, पण आपण जर बोललो की नाही तिला झोपायचं आहे थोडं आधी किंवा करून घ्या. थकली आहे तर ऐकतात, पण बरेचसे पॅरेंट्स ना बोलायलाच घाबरतात. When we talk about holistic development, you will need a healthy social life. You will need leisure time for yourself. You will need some time to just unwind. You will need time to do something creative which is fun, not for work. आणि ऍज इट इज बऱ्याचशा वेळेला आताही जे काही शूट्स होतात तर प्रोडक्शन हाऊस पण तेवढं कोऑपरेटिव्ह असतं की ठीक आहे तुम्ही तुमचं स्कूल करून ऍडजस्ट करा, संध्याकाळी स्कूल झाल्यानंतर वी कॅन काही शूट्स सीन्स करू शकतो. सो इट इज ऑल अबाउट गिव्ह अँड टेक. आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, एक लाइमलाइट मिलती है, आपको लोगों का प्यार मिलता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ जाता है, ओके आई एम लाइक दिस एंड दैट. Innocence starts fading away. And now with social media coming in, that the craft has turned into popularity, into fame. My fear is they start losing creativity. Ego, big no. As I said in my previous statements, they were so down to earth. They used to follow all the school norms. So I never met any child who has an ego or a rudeness or a not obeying or not adhering to the school rules. No. That once you are in school, you are a school child. When you are going for an event,
Yes, you are doing your professional work, you are doing and catering your passion, school is supporting you. For me, so many children have passed out and they're still with us. They're always polite, very humble, and they're very God fearing. मैंने कभी उसको ज्यादा फेम या स्टारडम के वे में लिया, बट आई एंजॉयड इट प्रॉपर्ली. तो जब मुझे ये लाइमलाइट मिली तो मैंने कभी इसको एज अ लाइमलाइट नहीं देखा, हमेशा मैंने इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा, क्योंकि यू नेवर नो, आज है कल नहीं. But then after a year it got normal, and then I craved for a normal life after then, so I took a break. बोलते हैं कि वो ब्रेक ले लो, ये ले लो, बट आई ऑलवेज बिलीव कि यार ब्रेक हम कैसे लें, बिकॉज हम इतने पैसे वाले नहीं होते हैं कि हम ब्रेक लेके घर में बैठेंगे और पैसा आ रहा होगा. डेफिनेटली वी हैव टू वर्क. So I have seen parents who say कि your money they can put it in the bank, but stay in your limits. You are a kid, you're famous later. Whereas I've seen other people, no, we want to earn by you. They pamper them, they do this, and वो सिर के ऊपर चढ़ा के, and अलग story ही होता है of those kids. I've seen n number of kids like this. You are not famous as it is. You have worked for it, and this is your work. And I just have to perform. I just have to give my best. We all in the media, the moment you become a little famous, you can't even go shopping. If you go on a motorbike, it's like, oh my God, you're going on a motorbike. Sort of a scenario. Oh, you're going in an auto. I mean, you lose those things which you otherwise enjoy, But still, from inside we are kids. From inside we might not explore to the knowledge जो स्कूल में मिलती है, जो कॉलेज में मिलती है. तो कहीं ना कहीं जब हम एक कॉलेज के बच्चे से मिलते हैं, स्कूल के बच्चे से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग कॉलेज से होती है, हमारी थिंकिंग सेट से होती है. हमने सेट पे जो देखा. When it comes to self-image, the media can be quite harsh, and therefore it is important to kind of look at yourself realistically rather than through a media lens, and look at yourself as a growing person. Like, you're not there yet. सारी चीजें आपको खुद से करनी होती है. There is no pampering, there is no loving, there is only hard work, there is only focus, determination. That's it. You have to work hard or you have to go home. When you're acting and when you're out there in the media, you're open, you're vulnerable, you're open to criticism. And for children to take criticism and feedback becomes very difficult. They take it personally. It's totally a mental game. You have to be ready in every prospect. ये बात सच है कि हम अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं. इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम पहली चीज़ तो अपनी स्कूल लाइफ मिस कर देते हैं, हम अपनी कॉलेज लाइफ मिस कर देते हैं, और दोस्त भी हम ज़्यादा नहीं बना पाते, बिकॉज हम मोस्टली सेट्स पे रहते हैं. बचपन में सेट पे रहते हैं, कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं, स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं, और हम छोटे ही होते हैं. You have to find ways which do not which does not rattle their world, because Santa Claus still exists for them, so you do not let that go. Everybody wants fame, everybody wants to be famous, and money, all this thing is involved when you are in front of the media. You should put them only if they are enjoying it, not for parents' enjoyment or money or whatever, because there are a lot of cases like this also. त्यांना आवडतं त्यांना करायला पाहिजे. त्यांना जर का नाही आवडत असेल तर ती कान डू. त्यांना फोर्स करायची काही गरज नाही आपल्याला. इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं टू अचीव अ सर्टेन गोल. ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना और आप बन गए. It can be some very small reason. Like, people found them very cute as an artist. So that was the reason they wanted to hire them. Now when they grow up, they suddenly have different parameters. It's called for. Like when some people want it, some people don't want it. And my question is, if you want it, then you're getting it. And if you don't want it, why you're in this line then? It all depends on ourselves. Your own values, which you have inculcated through your family, which you have inculcated through your school, which you're learning and imbibing, seeing the goodness of other people. I don't want to go in that glamour zone. I want to act and I want to do good films and good web series. So I think I am working towards that, and I don't take pressure of how to be. Acting पण कंटिन्यू करणार आहे आणि मी मम्मा डॅडींचा बिझनेस पण कंटिन्यू करणार आहे. 6-7 साल का बच्चा समझो अगर बोल रहा है कि मुझे टीवी में जाना है, तो वो ऐसे ही बोल रहा है. कल वो बोलेगा कि मुझे कंडक्टर बनना है, परसों बोलेगा ड्राइवर बनना है. डेफिनेटली वी फील प्राऊड फॉर इट. आणि जी ओळख आम्हाला तिने दिली, आमच्या पूर्ण फॅमिलीला,
मायराची आजी, मायराचे आजोबा, मायराची आई, मायराचे बाबा, ही ओळख एक आहे ना वेगळी आहे आणि ते ना आम्हाला असं खांद्यावरती प्राऊडली घेण्यासाठी पण खूप आवडतं. As parents deciding that, where do you want to see your child in the future? Your happiness is more important, the name fame is more important. What is it that you are looking for? They are dealing with a lot of challenges. They are balancing out a very early work life, which children really are not meant for. तो एज अ करियर बच्चे को मत कराओ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ. एज अ फन एक्टिविटी तुम किसी शूटिंग में ले गए या किसी शो में उसको डाला है. When you are taking a child actor, don't make it a complete business for yourself. You have made the decision that you want to be in this industry. Just have patience and have that passion to work hard, don't give up, and have patience. I think is the important keyword here. हर इंडस्ट्री में रिस्क है, हर इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम है, हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है, हर इंडस्ट्री में कंपैरिजन है. आई थिंक मैटर वो करता है कि हाउ यू आर. At the end, is it worth the cost? Is it worth the cost?